सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, जिसके अंदर आपका फ्रंट एंड भी होगा, जिसके अंदर आपका बैक एंड भी होगा, जिसके अंदर आपका डेटाबेस भी होगा एंड कनेक्टिविटी होगी बिटवीन द फ्रंट एंड, बैक एंड डेटाबेसेस। ओके, सो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने React JS यूज करा है फॉर फ्रंट एंड एंड फॉर गिविंग द CSS वी हैव टू यूज बूटस्ट्रैप, क्योंकि बूटस्ट्रैप बहुत ही इजी होती है और ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करने के लिए भी होती है, इसलिए हमने बूटस्ट्रैप यूज करा ताकि हम जल्दी CSS यूज कर सके। ओके, एंड हमने एक बैकएंड बनाया। बैकएंड के अंदर हमने Express.js यूज करा है। फॉर डेटाबेसेस हमने mysql यूज करा है एंड फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन वी हैव टू यूज JSON एंड bcrypt ऑल्सो। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेरा जो डैशबोर्ड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो इसके अंदर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसके अंदर हमने एक डैशबोर्ड बनाया, जिसके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन पेज रखा है, एक लॉगिन पेज रखा है। ओके, जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो ना, तो आपका एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका ईमेल डालना पड़ेगा, नेम डालना पड़ेगा एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो तो आपको एक पॉपअप शो हो रहा होगा कि ईमेल ऑलरेडी एक्सेस, क्योंकि मैं इसको यूज कर चुका हूँ पहले ही, इसलिए मेरा ईमेल ऑलरेडी एक्सेस शो हो रहा है। ओके, तो जैसे ही मैं ईमेल ऑलरेडी एक्सेस शो हो रहा है, तो अब मैं जाऊंगा लॉगिन पे, क्योंकि जो मेरा ईमेल ऑलरेडी एक्सेस है, तो मैं यहाँ पे जाके ईमेल क्लिक कर लॉगिन करूंगा। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरा लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही मेरा लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है, तो अब मेरे को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन बटन यहाँ से हाइड हो चुके हैं। ओके, एंड मुझे यहाँ पे लॉग आउट का बटन शो हो रहा है। जैसे ही मैं टास्क पे क्लिक करता हूँ तो मेरा एक यहाँ पे टास्क मैनेजर स्टार्ट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर ईमेल पर मैंने यहाँ पे एक टास्क ऑलरेडी ऐड करके रखा है, इसलिए मुझे ये टास्क शो हो रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक न्यू टास्क क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक नया टास्क लेता हूँ, टास्क 2 नाम से, डिस्क्रिप्शन 2 नाम से, and we have to put like date. Okay, and we have to put like what was the status, like high, low, medium. So if I write high, then it will go to the high priority. Okay, so when I'm add that, जैसे ही मैं ऐड करता हूँ तो ये हाई प्रायोरिटी पे ऐड हो जाएगा, ये मीडियम पे। अगर मुझे लो, लाइक जो मेरा टास्क है वो लो प्रायोरिटी पे है, तो मैं उसको लो पे शिफ्ट कर सकता हूँ। ओके, सो ऐसे करके मेरे यहाँ पे टास्क क्रिएट हो रहा है। और मुझे डिलीट करना हो तो मैंने दो बटन लगाए हैं इधर, एक एडिट का और एक डिलीट का। जैसे मैं डिलीट करता हूँ तो पर्टिकुलर टास्क डिलीट हो जाएगा, और जैसे ही मैं ऐड करता हूँ तो एक नया पॉपअप स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही नया पॉपअप आएगा, उसके अंदर जो मेरा टास्क ऑलरेडी था, टास्क 2, वो शो होगा, डिस्क्रिप्शन शो होगा, यहाँ पे डेट हो सकती है। अगर आपको डेट को चेंज करना हो, प्रायोरिटी चेंज करनी हो कि भाई मेरा ये हाई प्रायोरिटी था या मेरा लो प्रायोरिटी या मीडियम प्रायोरिटी था, वो। एंड यहाँ पे एक मेरा पेंडिंग, जो मेरा स्टेटस था वो मेरा पेंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये टास्क कंप्लीटेड हो चुका होगा या इन प्रोग्रेस होगा, तो मैं यहाँ पे वो चूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये टास्क मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मैं कंप्लीट चूज कर रहा हूँ। जैसे ही मैं कंप्लीटेड करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो स्टेटस है वो मेरा कंप्लीटेड शो करने लगेगा। ये मेरा एक टास्क मैनेजर ऐप टाइप का है। ओके, एंड यहाँ पे एक लॉग आउट बटन है। जैसे ही मैं लॉग आउट करता हूँ तो मेरा लॉग आउट हो जाएगा वो पर्टिकुलर ईमेल, एंड वापस से आप रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो कैसे हमने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करा, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर कंपोनेंट्स बनाए। सबसे पहले हमने कंपोनेंट्स बनाए। अगर आपको React.js आता है तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा ये टास्क को क्रिएट करना। सबसे पहले आपको npm create react ऐप से एक ऐप एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा रिएक्ट के लिए, एंड सेम एज फॉर सर्वर के लिए। तो सबसे पहले हम React.js का फ्रंट एंड पार्ट देखते हैं। फ्रंट एंड पार्ट के अंदर हमने जो सारी की सारी चीजें उसको स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है, इसलिए हमने एक कंपोनेंट फोल्डर लिया। कंपोनेंट फोल्डर के हमने चार फाइल्स लिए। सबसे पहली फाइल हमें लॉगिन जेएस है, रजिस्ट्रेशन है, टास्क लिस्ट है, टास्क लिस्ट सीएसएस है, क्योंकि हमने CSS भी प्रोवाइड करी है। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज app.js। इन app.js we have to enter all the things like registration button, login and task button. Okay, so like we have to create a dashbar in the app.js। so हमने इसके अंदर एक थर्ड लाइब्रेरी यूज करी है जिसका नाम है React Router DOM, which is used to navigation the web pages from one page to another page. Okay, and we have to use Bootstrap for the like giving the CSS. We have to use Bootstrap. So सबसे पहले हमने क्या करा है, सबसे पहले हम एक
सबसे पहले हमने यहाँ पे नेविगेशन राउटर क्रिएट करा है। नेविगेशन राउटर क्रिएट करने के बाद हमने एक लाइक नेव बार क्रिएट करा है। नेव बार के अंदर हमने टास्क मैनेजर दिया है जिसका ब्रांड है, जो एक लाइक टास्क मैनेजर, एक टाइटल दे दिया हमने। ओके, जैसे ही हमने टाइटल दिया है उसको, तो यहाँ पे हमने तीन चीजें रख के रखी हैं जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एंड टास्क टास्क है। ओके, एंड हमने यहाँ पे लाइक एक्सक्लेमेशन और टोकन लिख के रखा है। एक्सक्लेमेशन मीन्स फॉल्सी वैल्यूज। ओके, सो जब तक मेरा कोई यूजर लॉगिन या रजिस्टर्ड नहीं होगा, ओके, लॉगिन नहीं होगा, तो तब तक मुझे ये वाला डैशबोर्ड शो होता रहेगा। और जैसे ही कोई मेरा यूजर लॉगिन हो जाता है ना, तो मुझे यहाँ पे लॉग आउट का बटन शो होने लगेगा। तो ये मैंने फंक्शनलिटी यहाँ पे यूज करी है, टर्नरी ऑपरेटर, लाइक टर्नरी ऑपरेटर यूज करके मैंने यहाँ पे ये चीजें शो करी है। जैसे ही मेरा कोई यूजर लॉगिन हो जाता है, ओके, सो मुझे ये तीन पेजेस दिखने लगेंगे, लाइक रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एंड अपना टास्क लिस्ट। ओके, तो सबसे पहले अपन मूव करते हैं रजिस्ट्रेशन पर। जैसे ही अपन रजिस्ट्रेशन पेज पे जाते हैं, तो मैंने एक सिंपल फॉर्म क्रिएट करा है जिसके अंदर मेरा नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है और एक मेरा बटन है। यहाँ पर जैसे ही मैं सारी चीजें करता हूँ, तो एक मेरा यहाँ पे हैंडल सबमिट कर कर एक जो मेरा फंक्शन है वो कॉल होगा। जैसे ही मेरा हैंडल फंक्शन कॉल होता है, तो मेरा यहाँ पे रजिस्टर यूजर फॉर्म डेटा आता है। तो रजिस्टर यूजर फॉर्म डेटा मेरा यहाँ से क्रिएट हो रहा है। जो सारी चीजें मैंने फॉर्म के अंदर क्रिएट करी है, वो मेरा नेम में जा रहा है, ईमेल में जा रहा है, पासवर्ड में जा रहा है। ओके, तो जैसे ये सारी चीजें जाती हैं, तो एक मेरा हैंडल चेंज करके जो चीजें हैं जिसके अंदर मेरे पहले से ही लाइक जब मैं नेम कर ईमेल और पासवर्ड डाल रहा हूँ, तो वो सारी चीजें मेरे हैंडल चेंज में जा रही है। ओके, और फिर मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जिसके अंदर रजिस्टर यूजर फॉर्म डेटा है। जैसे ही वो रजिस्टर यूजर फॉर्म डेटा है, तो यहाँ पे मैंने एक एपीआई लगाई है और रजिस्टर यूजर कर ये रजिस्टर एपीआई मेरी एपीआई करके एक फाइल है उसके अंदर। तो इस एपीआई के अंदर, इस एपीआई फाइल के अंदर मेरी सारी एपीआई है। लाइक वी हैव टू फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, वी हैव टू पोस्ट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, वी हैव टू अपडेट दैट, वी हैव टू डिलीट दैट। तो मैंने सारी की सारी जो मेरी एपीआईज हैं, वो मैंने एक लाइक अलग डिफरेंट फाइल वी हैव टू क्रिएट इट, एंड वी हैव टू enter that all the things we have to enter that। okay, so एक मैंने अलग से एपीआई बना दिया है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे ही मैं एपीआई पे रजिस्टर करता हूँ, तो वो सारी चीजें मेरी यहाँ पे जाएगी। अब अगर मेरा पहले से ही डेटा यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा, तो वो मुझे यहाँ पे शो कर देगा रजिस्टर फेल्ड। ओके, अगर मेरा कुछ पहले से ही डेटा एंटर होगा, या पहले से ही वो पर्टिकुलर यूजर लॉगिन होगा, या फिर अगर मैं गलत क्रेडेंशियल्स डालूंगा, तो मुझे यहाँ पे शो होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आई यूज अ करेक्ट ईमेल, देन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली शो होगा। जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करता हूँ, तो अब मैं जाऊंगा लॉगिन पेज पर। जैसे ही मेरा लॉगिन पेज पे आता है, सेम ईमेल, पासवर्ड और बटन बटन दिया है मैंने। जैसे ही आप सारी क्रेडेंशियल्स डालते हैं, तो वो यहाँ पे आएगा। सेम एज इट इज फॉर रजिस्ट्रेशन, वी हैव टू क्रिएट अ पेज एंड फंक्शन फॉर द लॉगिन। ओके, अब बस यहाँ पे एक लॉगिन यूजर है, यहाँ पे लॉगिन यूजर भी एपीआई से कनेक्ट होके आ रहा है। ओके, तो जैसे ही में लॉगिन यूजर होता है, तो एक कोड से एक सेट टोकन जनरेट होता है। ये सेट टोकन जनरेट होगा, और ये सेट टोकन मेरा जैसे ही जनरेट होगा और लॉगिन सक्सेसफुली शो कर देगा। और अगर कुछ एरर या फिर पर्टिकुलर लाइक कुछ एरर आती है, कुछ भी आता है, तो वो मेरा लॉगिन फील्ड के अंदर चल जाएगा। ओके, जैसे ही मेरा पर्टिकुलर यूजर लॉगिन होता है, तो अब मुझे मूव करना है मेरा टास्क लिस्ट के अंदर। जैसे ही मेरा टास्क लिस्ट है, इसके अंदर मैंने एक फॉर्म क्रिएट करा है जिसके अंदर मैंने सारी चीजें डाल के रखी है। लाइक टास्क मैनेजर, मैंने एक हेडिंग दे के रखी है, मैंने सारे के सारे इनपुट्स देके रखे हैं कि इनपुट टास्क, इनपुट डिस्क्रिप्शन, what is the priority। okay, there's a button after that, if particular user wants to edit that, delete that, so all the things we have to enter, we have to write in that particular code। okay, so you have to also create like that। okay, so मैंने यहाँ पे टास्क, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो जो यहाँ पे मेरी सारी डिटेल शो हो रही हैं, वो मैंने यहाँ पे करके रखी है। ओके, जैसे ही कोई एडिट पे क्लिक करता है, तो अब मैं आपको एडिट की फंक्शनलिटी बताता हूँ। जैसे ही कोई एडिट पे क्लिक करता है, तो ये मेरा एडिट बटन है। जैसे ही कोई एडिट पे क्लिक करेगा, तो मेरा सेट एडिट होगा, और सेट एडिट के बाद एक सेट शो मॉड्यूल, जो मेरा मॉड्यूल है वो कॉल होगा। और जो मेरा मॉड्यूल है, वो मेरा ये मॉड्यूल है, मैंने इसी पेज पे क्रिएट करके रखा है। तो वो मेरा मॉड्यूल ये है। तो जैसे ही कोई सारी की सारी चीजें क्रिएट होती है, तो वो मेरे ये वाले मॉड्यूल के अंदर चली जाती है। ओके,
तो ये मेरा सेट एडिट का बटन है, और सेम एज इट इज फॉर डिलीटेड का बटन है। डिलीटेड के अंदर भी मैंने सारी चीजें डाल के रखी है। इसके अंदर मैंने फिल्टर लगाया है, क्योंकि अगर मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे पर्टिकुलर टास्क ही डिलीट करना है, तो वो मुझे आईडी से पता चलेगा। जैसे ही मैं आईडी पे क्लिक करता हूँ तो पर्टिकुलर आईडी मैच करेगा। इफ आईडी इज मैच देन पर्टिकुलर डेटा इज डिलीटेड, ओके। Otherwise it will give some error, like error deleting task, or like that, okay. So that's the front end part, okay. And if you talk about the backend part, in backend part you have to, I have created a one file which is called server.js, and in server.js we have to use like express.json web token, okay. So we have to first connect with the databases, okay. So I have used the mysql databases. In mysql databases you have to first create XAMPP, and you have to connect that, and after that you have to run that program. So I have to use XAMPP server. So I already run the Apache and MySQL, and I already created a databases. Okay, for example, as you can see that I've already created a task manager table where I've used two tables. Okay, first one is a task and second one is the user. Task is nothing but like those task lists, like what is the task, what is the description, what is the date, what is the priority, all the data I have to enter in users. And for registration purpose, like what is the what is the user, what is the name of the user, what is the password of that, what was the token of that. So we have to enter those details in tasks and users, okay. So I've created that, okay. After that, in server.js, connection database connection is created, okay. So we have to create a connection between that now, between the front end and back end. So you have to run both front end as well as back end. For example, I have give an example, okay. This is my registration page, okay. And when I'm writing, like when I'm fill the details, name, email and password, then it will goes to the handle submit function. And in handle submit function I'll call one API which is called register user. So as you can see that my API, this is my API, okay. Registration, yes, this one is my API. So this one is my API. So when I'm trigger that particular API now, so my authentication, check first my authentication if that particular user is already created or not. So if already created, then it will give some message like user already exists, or user already created, these kind of stuff, if that particular person is already exists, okay. Otherwise it will create one user, okay. So that's how and we have to we have to for example, for example my front end code is run on server 3001, okay, and my backend server is run on 5000, okay, which is the port number. So through to connect between that I have to use API URL 500. So which means that it gives my backend server URL. So I've used that and connected between that, created a connection between that, okay. So I create a connection like a register. Okay. So when I'm writing, when I'm create a form and enter the submit button, then this will happen, okay. So in login, first I'll talk about the registration. Okay, so in registration, first name, email, and password is coming. Okay, when name, email, is password is coming, so we have to use hash password. Hash password we have to use for decrypt the password, which means that if particular password, for example, I write 123 password. Okay, so no other like hacker or whatever those people don't know, don't hack that particular password. That's why we have to convert it into bcrypt. There is some keyword, that particular password is bcrypted, okay. Then the particular password, email, all the things are going to our databases, okay. So that's how we have to create a registration button.
when I created a registration button and the user successfully registered, so we have to log in that. Okay, so when I'm using the login now, so email and password is coming. Okay, so in email and password, first we have to find the user dot length. For example, if I don't write nothing, like for example I write a email 1234@gmail.com and enter, so their error is coming that password you have not right now, so user not found. If particular password is not valid or these kind of stuff things, we have to use user not found. After that we have to use is match variable where I use bcrypt. So in registration we have to use hash password for converting our password into a bcrypt, which means that no other things can write read that particular password. That's why we have to use bcrypt to convert that particular password in original password, and we have to compare the password before like in databases and user. If both password are matched now, then token is generated. One token is generated. So token is nothing but a combination of id and jwt secret key. Secret key is nothing but you have to given that secret key so that no other person can access this know the access of that particular key or know that secret key. Okay, so we have to use, and after that we have to use expires in 1h. Expires in 1h means that, for example, you have to register at 11 o'clock. Okay, after after 1 hour, if you go through that page now, then the registered person is automatically logged out, because we have to expires in 1 hour, so that particular user automatically expire after 1 hour. Okay, so that's how we have to create a login page. And if for example, okay, so we have to use auth middleware. Auth middleware we have to use for example, user A is login. Okay, and user A creates one task. Okay, when user A creates one task and user A is logged out automatically, and after some time user B is login, and user B showing their dashboard, so it does not show the task which user A is created. So that's why we have to use auth middleware. Okay, so only the particular person see that uh, particular task, or otherwise it will not. Okay, so we have to create a post, we have to create a get. uh, in post request we have to whatever we have to enter in our form, so it will go to the post url. Okay, and whatever we have to get, like we have to see in our application, so it will see in get API. Okay, and get API is for we have to pass one ID. So ID is nothing but whatever we have to change in particular task, so that will change in get. Okay, put is nothing but updated that particular URL. Okay, delete is nothing but to delete that particular task or not. Okay, so that kind of stuff we have to use. So yeah, so that is the um that is the process for front end to connect with the front end and back end. And I've showed one like credentials also, because you are a beginner. So we have to create a one .env file, like port, db host, user, password, db name, secret key, and session key. Okay, so you have to create it also .env file, because .env file is created like it is you can say that it gives security of our credentials, which means that no other one can access, like no other one can access the .env files. Okay, so whatever you write in .env file, no one can access that file. So that's why we have to create like main credentials which you don't to see other, so you have to write in .env file. So or for access that .env file, you have to use
you have to use process.env, like as I said earlier, you can use like process.env, and whatever you have to write uh, in key, so you have to pass that particular key to access this. So yeah, that's all about our front end, back end, and databases. So that is all about that particular task. And if you like that, so please like, share, and subscribe, and press the bell icon for my latest notifications. Thank you.